prove that 3 sin inverse x is equal to, prove that 3 sin inverse x equal to sin inverse 3x minus 4x cube. Take longest side. Always consider the side which having more terms. So this side having more terms, so take RHS. Sin inverse 3x minus 4x cube. Sai Vatkar, what is your problem? सर वो आपने इनवर्स एक्स के पहले क्या लिखा है? अच्छा, दिख गया सर। Open your textbook, exercise 2.2. 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube. This is your question. Number 1. Open your textbook. Take longest side which having more terms, RHS. अब आपको सारे फॉर्मूले मेमोरी में होने चाहिए. This question is generated from sin 3a. Sin 3a. 3 sin a minus 4 sin qa. 3 sin a minus 4 sin. इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को जनरेट किया है. 3 sin a minus 4 sin qa. So in place of x you have to put x is equal to sin a, sin theta. This question is generated from the formula this. आपको सारे फॉर्मूले मेमोरी में होने चाहिए. So putting x is equal to sin theta. जब भी algebraic function होगा you have to always to put theta is equal to sin inverse x. So your question becomes sin inverse 3 sin theta minus 4 sin q theta. This is the formula of sin 3a. 3 sin a minus 4 sin qa. This becomes sin inverse sin 3 theta equal to, and you know sin inverse sin theta, sin inverse sin theta equal to theta. Sin inverse sin 3 theta is equal to 3 theta. But theta is equal to sin inverse x. Sin inverse x. This is your LHS. Hence proved. आपकी मेमोरी में सारे फॉर्मूले होने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2 is also same. Prove that 3 cos inverse x equal to cos inverse 4x cube minus 3x. This question is generated from the question
from the formula cos 3a. So you must remember cos 3a. फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए. 4 cos qa minus 3 cos a. जब क्वेश्चन जनरेट किया तो उसने क्या कर दिया, इसके प्लेस पर x रख दिया, यहाँ x रख दिया. तो कंपेयर दिस 4x. In place of x, there must be cos. So putting x is equal to cos theta. Theta is equal to cos inverse x. Now see cos inverse. Replace x by cos theta. 3 cos theta minus 4 cos q theta. Now this is the formula of cos 3a. This is the formula of cos 3a. 4 cos qa minus 3 cos a becomes cos 3a. Cos 3 theta. And cos inverse cos theta, you know, cos inverse cos theta is equal to theta. 3 theta. And theta is what? 3 cos inverse x. इंसान है. Question is simple. Next question, question number 3. Student, you have remember all the formulas. Tan inverse tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24 is equal to tan inverse half. You have to prove this. Now you have remembered the formula of tan inverse x. This tan inverse x plus tan inverse y. For C formula, tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. If xy less than 1, if product of x and y less than 1, this formula. If product of x and y greater than 1, then add phi. So take LHS. LHS contain both terms. LHS tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24. Now use the formula tan inverse x plus tan inverse y. Tan inverse 2/11 plus 7/24 upon 1 minus 2/11 into 7/24.
24. Now simplify it. Product of x and y is less than 1. 2 upon 11 into 7 upon 24 less than 1. Simplify it. Tan inverse, take LCM, 11 into 24. 48 plus 77 upon 11 into 24. 264. Minus 40 upon 11 into 24. This cancel out. Now simplify this. It becomes 10 inverse this. 8 plus 5 125 होगा क्या? This is 264. 264, right? Minus 40 equal to 10 inverse 125 upon 250 and cut short 10 inverse half. This is your answer. Because remember only formula 10 inverse x plus 10 inverse y, 10 inverse x. Simplification. ये तो कोई भी कर सकता है simplification. Only apply the formula. Next question. 4. Question number 4. 2 10 inverse half. Prove that 2 10 inverse half plus 10 inverse 1 upon 7 equal to 10 inverse 31 upon 20. First of all, apply the formula 2 10 inverse x. After that, apply this. So see the formula of 2 10 inverse x. 2 10 inverse x in terms of 10. So 10 inverse. Some are talking, some students are talking, involved in talking. They are not paying attention. So first of all, apply this formula 2 10 inverse x. 10 inverse 10 का formula 10 में ही apply करना है because next term is of 10. अगर यहाँ cos का होता then we will apply in terms of cos. If here is sin then we will apply in terms of sin. So apply 10 inverse in terms of 10. LHS. This is your LHS. 2 10 inverse half plus 10 inverse 1 by 7. Apply the formula in this term 2 10 inverse x. This one 10 inverse 2. This is your x. 1 by 2 upon 1 minus x square. 1 upon 2 square plus 10 inverse 1 by 7. This cut short 10 inverse 1 upon 1 minus 1 by 4
plus tan inverse 1/7. Tan inverse, it becomes 3/4. When you will simplify, it becomes 3/4. So it becomes 4/3 plus tan inverse 1/7. Now apply this formula: tan inverse x plus tan inverse y, tan inverse x plus tan inverse y, x plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Tan inverse 4/3 plus 1/7 upon 1 minus 4/3 into 1/7. Do calculation and get your answer. मैंने कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दी है. Simplify. After simplifying, you will get this answer. So do your calculation yourself. Now see next question. Do calculation yourself. See question number 10. Now write in simplest form. Good question. Tan inverse root 1 plus x square upon x minus 1. You have to write your answer in simplest form. Express in simplest form. Now student, pay attention here. This is here if there is algebraic term. अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के साथ algebraic फंक्शन होगा, then you have always to put, कुछ पुट करना है हमको. किसी इनवर्स फंक्शन के साथ कोई algebraic फंक्शन कनेक्टेड है, then we have to put. सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ. आप सब्स्टिट्यूशन कैसे करें? मैंने बताया था आपको. If a square expression is this, then put x is equal to a tan theta or a cot theta or a cot. जब भी आपका एक्सप्रेशन algebraic term इस फॉर्म में होगा, then you have to put either x is equal to a tan theta और a cot theta. आपका इसी टाइप का है. Here in place of 1 it is 1 square plus x square. So when you are putting, replace a is equal to 1. So replace a is equal to 1. You have to put x is equal to tan theta. Because value of a is 1. इससे मिलता जुलता ये आपका. Then you have to put x is equal to, अगर ये exact ऐसा है, then you will put x is equal to a tan theta. But in place of a, here a is 1. अगर आपका ऐसा है 4 plus x square, then express it 2 square plus x square. There you will put a is 2. You will put here f is equal to 2 tan theta. So pay attention. Put x, putting x is equal to tan theta. Theta is equal to tan inverse x. So your question becomes tan inverse. Yes, sir. Yes, what is your doubt?
Pradeep, what is your doubt? Pradeep, 12th B, what do you want to say? Pradeep, say something if you want to say. कुछ कहना है तो कहिए. प्रदीप जी, पे अटेंशन ऑन क्वेश्चन. हमको ये पुट करना है x इज इक्वल टू 8 tan थीटा. ये ठीक करिए, मैंने बता दिया है इस फॉर्म में एक्सप्रेशन होगा, इससे मिलता जुलता. Then you have to always put a is equal to tan theta. Your expression is here 1 plus x square, 1 square x square. So value of a is this 1. So you have to put x is equal to 8 tan theta. Your question becomes 1 plus tan square theta minus 1 upon tan theta. Now you know 1 plus tan square theta sec square theta. One plus tan square sec square root of sec square sec theta. 1 plus tan square becomes sec square and root of sec square is sec theta minus 1. ये क्लियर हो गया होगा आपको. वन प्लस tan square theta is equal to sec square theta. Now change your question in terms of sin and cos. Tan inverse sec 1 upon cos theta minus 1 sin theta upon cos theta. Simplify it and take LCM. Tan inverse 1 minus cos theta upon cos theta upon sin theta upon cos theta. Cos cancel out. So see remaining 1 minus cos theta in numerator upon sin theta. अब बाहर आपका tan इनवर्स है, then you have to convert this in terms of tan. जो बाहर होगा वही अंदर टर्म क्रिएट करना है आपको. You have to create the term of tan inside the bracket. जो बाहर इनवर्स फंक्शन होगा उसी के टर्म अंदर लाने हैं आपको. So 1 minus cos theta is direct formula. This is formula 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2. 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2. Now this is theta by 2. Then change this sin theta in terms of theta by 2. So 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Sin A 2 sin A by 2 cos A by 2. Both are this formula 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2 sin theta 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Now cut short this a cos sin cancel out. Remaining part tan inverse sin theta by 2 upon cos theta by 2. Sin upon cos tan inverse tan theta by 2. Tan inverse tan theta is equal to theta by 2. Put the value of theta is what?
tan inverse x is equal to half tan inverse x. If you have any doubt, then you can ask. If you have a doubt in any step, then you can ask. Raise your hands. No, sir. किसी को कोई डाउट है? विदाउट एनी एजिटेशन पूछिए, आप पूछना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, जब भी अलजेब्रिक टर्म आएगा इनवर्स के साथ हमेशा पुट करना है। पुट करने के सारे मैंने सब्स्टिट्यूशन लिखा दिए थे, उसको ध्यान में रखिए और देन सिंपलीफाई दिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉक कर लीजिए। Next question 6. Tan inverse 1 upon root x square minus 1. Write in simplest form. Here is algebraic term. जब भी algebraic term होगा, then you have to put something. So see here. एक्सप्रेशन अगर आपका ऐसा है, एक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस फॉर्म में है, देन पुट ऑलवेज पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। दोनों से सॉल्व हो जाता है इजीली, लेकिन इन योर क्वेश्चन एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 is 1 square. So in place of a you have 1. a के प्लेस पर क्या है 1, तो जब पुट करेंगे तो we will change a into 1. That means we will put x is equal to sec theta, because a की वैल्यू आपकी 1 हो गई। कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर सेम a स्क्वायर here, but here is 1 square. So change a into 1. That means you will put x is equal to sec theta or cosec theta. So putting x is equal to sec theta or cosec as you like. Theta is equal to sec inverse x. Now your question becomes tan inverse 1 upon root sec square theta minus 1. You know, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. So sec tan square theta is equal to sec square theta minus 1. So sec square theta minus 1 is equal to tan square theta 1 upon root tan square theta. Tan inverse 1 upon tan theta. 1 upon tan theta means cot theta. 1 upon tan means cot. But you are outside is tan and inside the bracket is cot. जो outside है वही term inside होना चाहिए. Now change this cot in terms of tan. तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है cot theta is equal to tan pi by 2 minus theta. जब भी चेंज करना हो तो 90 से चेंज करते हैं। cos जैसे cos theta is equal to sin pi by 2 minus theta. cos से sin में जाना है, cot से tan में जाना है, 90 से चेंज करो। tan inverse
change this cot theta is equal to tan pi by 2 minus theta. Tan inverse tan theta. Tan inverse tan theta is equal to theta pi by 2 minus theta. Now theta is what? Theta is sec inverse sec. So your question is pi by 2 minus sec inverse x. इतना भी छोड़ सकते हैं और ये भी फॉर्मूला होता है आपके पास sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2. Sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2. So pi cosec inverse x is equal to pi by 2 minus sec inverse x. So you can also write here what आप इतना आंसर छोड़ सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है sec inverse है not involved talking. Sir, Have you downloaded then? अभी रोज की इतने है नहीं वो एक टॉपिक जी तो बेटा है तो खाली तो जाना आना नहीं है तो मैंने इसकी बोल दिया हेमंत शर्मा, महक अग्रवाल, I am taking your attendance is compulsory. Okay. The next question. Question number 7. Tan inverse root 1 minus cos x upon 1 plus cos x. मैंने बताया स्टूडेंट इफ देयर इज एनी एल्जेब्रिक टर्म, अगर यहाँ एल्जेब्रिक टर्म है देन आपको पुट करना है. अगर एल्जेब्रिक टर्म नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के टर्म है, तो फॉर्मूला यूज करना है आपको, कोई जो फॉर्मूला पॉसिबल है. So here is not algebraic term, these are trigonometric terms, so you have not to put नहीं करना है, you have to apply formula. These are direct formulas. Remember formula 1 minus cos theta 2 sin square cos square theta by 2. These are very important formula. They are used frequently. ये फॉर्मूला बहुत यूज होते हैं. 1 के साथ cos के साथ 1 आया है तो हटाना है ऑलवेज. cos के साथ जब भी 1 आए then you have to remove this one. इस 1 को हटाने के लिए 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2. So this is 1 minus cos theta 1 minus 1 plus cos theta. Use the formula directly. Tan inverse root 2
sin square x by 2 upon 2 cos square x by 2. Now simplify it. 2 cancel out. This becomes tan inverse रूट हट जाएगा sin x by 2 upon cos x by 2. Sin upon cos, it becomes tan inverse tan x by 2. Now tan inverse tan theta, theta x by 2. This is your answer. अगर ट्रिग्नो इनवर्स के साथ कोई एल्जेब्रिक टर्म है तो पुट करना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं है, एल्जेब्रिक टर्म है, तो कुछ आपको x की वैल्यू पुट करनी है। और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो ट्रिग्नोमेट्री के कोई फॉर्मूले यूज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सर क्लास खत्म हो जाएगी सर। व्हाट, क्या व्हाट आर यू सेइंग? से क्लास क्या खत्म कह रहे होने हो? वाली सर। कोई बात नहीं, बस 1 मिनट हिंट दे दूंगा मैं, आप कर लेना। कोई थोड़ा सा होमवर्क भी करना चाहिए, जिससे पेरेंट्स को लगे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को भी लगे बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा ही बहुत होता है। थोड़ी हिंट दूंगा, इस क्वेश्चन में आप इजीली सॉल्व करेंगे। cos x प्लस sin x, जैसा मैं एज आई टोल्ड यू, आउटसाइड इज 10, देन इनसाइड टर्म मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ 10। अंदर के टर्म भी 10 में ही होने चाहिए। तो in order to make in terms of 10, divide it for